Good afternoon, everyone. Welcome back to SSBCrack Exams. I'm back with the 1000 MCQ series for the English of your NDA 1 2022 एग्जामिनेशन और आज एक नया टॉपिक लेके मैं हाजिर हो गई हूँ. फटाफट से ज्वाइन हो जाओ गाइस. We are going to start with today's class as soon as possible and it will be a quite enjoyable session here. Okay. Join fast, guys. और अभी तक आपने अगर लाइक या शेयर नहीं किया इस पर्टिकुलर सेशन को वो भी कर दीजिएगा. ओके, गुड आफ्टरनून शौर्य, माही, मुस्कान, अनिरुद्ध, वैभवी. Alright guys, please like and share the session as soon as possible. ओके तो आज का टॉपिक क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज का टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स. तो जैसे आपको पता है कि अभी कुछ दिनों से हम लोग लाइव क्लासेस में लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे थे, जो कि एनडीए 1 2022 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. उनमें से वी हैव कवर्ड स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ a new topic which is fill in the blanks. क्या ब्लैक आ रही है अनिरुद्ध? Okay, this brings me to the question that I will be asking you guys. I hope that I am properly audible and visible to all of you. Yes, Nahush, there will be no class on Sunday. Okay. राइट. सो फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक काफ़ी एंजॉयबल है, काफ़ी इजी है. सबको पता ही होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स होता क्या है और सॉल्व कैसे करना है. तो काफ़ी इजी होने वाला है सेशन. तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ आज का क्लास जो है. आप लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाइए. अगर आप जुड़ रहे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर दोनों चीज़ कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, ठीक है. तो अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट, ऑल ऑफ यू मस्ट नो अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम विच इज इंडियाज नंबर 1 पोर्टल फॉर ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स. हमारे ऐप के अंदर आपको मिलेंगे सारे डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड कोर्सेज और इन कोर्सेज में आपको मिलेंगे वीडियो lectures, PDF study notes as per the updated syllabus of the exam, and you will also get all these things in the offline mode as well. तो offline में भी आपको access मिल सकती है to access all the lectures and study materials. Mock test भी हम provide करते हैं ताकि आपका preparation जो है वो अच्छे से हो सके. और mock test के results submit करने के बाद आपको एक smart analytic report मिलती है जिसमें आपकी all India ranking भी दिया जाता है. Study plans भी हमारे courses के अंदर है. तो अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट है और नेक्स्ट ईयर एनडीए या फिर एनडीए 2 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्टडी प्लान्स हमारे कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएंगे. Not only NDA, we also have study plans prepared for all defense exams. लाइव क्लासेस ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, आप लोग ऑब्वियसली ज्वाइन हो गए हैं लाइव क्लासेस के लिए. अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन हो गए हो तो प्लीज ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि एनडीए 1 2022 का जो लाइव क्लास होता है वो शाम 4 बजे से 7 बजे तक होती है. एंड CTS 1 2022 के जो लाइव क्लासेस होते हैं वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है एंड इट कंटिन्यूज टिल 1 PM. आई होप कि ये शेड्यूल जो है काफ़ी आप लोगों का नॉलेज में है ना. ओके, आई एम क्लियर, visible and audible. Okay, thank you so much for confirmation, guys. So here आप देख सकते हैं, here you can see all the courses that we have provided for you. बेस्ट सेलिंग कोर्सेस है, सब नहीं है, सारे आपके ऐप के अंदर मिल जाएंगे, बस कुछ ही मैं दिखा पा रही इधर. और हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज, जो कि मॉक टेस्ट के सेट्स है. जैसे आपको पता है कि किसी भी एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपने अभी तक एनडीए के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट किए हैं तो डोंट वरी, start it from today, and we have NDA 2022 mock test series already provided inside our app. So please get yourself enrolled into this mock test series and start practicing your mock test. And do not forget to use the code WARRIOR10 to get your enrollment inside any course or test series so that you get a 10% off on them. Okay. So now let's start with the fill in the blanks topic for today. Directions कुछ इस तरह होती है, ठीक है. till the exam Vaibhavi, this series will continue till 9th of April. Okay, all right. So the direction says that there will be some sentences and some blanks will be there. You have to find out the correct option from the 4 options which will be given below and fill in the blanks. Simple as that. दो तरह के fill in the blanks के questions आते हैं. एक है grammar based जहाँ पे आपको grammatical rules याद रखना जरूरी होता है, और second है vocabulary based यानी कि कौन सा appropriate word उस particular blank को fill करेगा, and that will match with the context of the sentence also. So ये दोनों चीजें जो है इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस अटेंड करने जा रहे हैं. So now let's start with the questions one by one. We will start with some previous year's questions first and then we'll go on to general practice questions. For every question, you will get 20 seconds to see the question and solve the answer. Okay guys? So let's start. This is the first question and it's taken from NDA 1 2021.
There was a time when West Germany was a distinct dash. Okay, so the answer will be there was a time when West Germany was a distinct polity. What is a polity? State. A state which is of a political authority. Okay, that's a polity. So वेस्ट जर्मनी का नाम सुना होगा आपने, तो एक समय वो पॉलिटी थे. वेस्ट जर्मनी एक पॉलिटी, एक स्टेट हुआ करता था, है ना. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा. एब्स्ट्रैक्ट मीन समथिंग दैट इज नॉट कॉन्क्रीट. ओके, पॉलिसी भी नहीं है और हायरार्की भी नहीं है. व्हाट इज हायरार्की? that which takes place one by one as an order. So hierarchy का मतलब है ऊपर जो रहता है highest order, उसके बाद lowest order and so on. So it's a particular pyramid shaped order that's called hierarchy. But here hierarchy is, it's not. West Germany was a state. Okay, so option B is your answer. Next one, taken from NDA 1 2021. I was dashed with the film. I had expected it to be better. ओके, टाइम्स अप गाइस. यहाँ पे आपको एक वर्ब चूज करना है. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है आई वॉज, सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म. मैं फिल्म के साथ डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि मैं उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट की थी. ओके, सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म. डिसअपॉइंटिंग, अनोइंग, दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स. ओके, which is not relevant here. Prejudiced means when you are biased. पर यहाँ पे biased नहीं, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट किए थे उस फिल्म से और काफी डिसअपॉइंटेड हो गए थे फिल्म देखने के बाद, है ना. सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. No, Nahush, it didn't come in NDA to 2021. Fill in the blanks didn't came. It was a dash experience. Everybody was shocked. Okay, time's up guys. The answer will be it was a terrifying experience. यहाँ पे क्या होगा, एक adjective का use करना होगा because this word will be describing the noun experience. What kind of experience? Terrifying experience. So horrified, terrified, these are all verbs. Okay, therefore we haven't chosen A or B. And denouncing is contempt, you when you don't like something. So वो denouncing experience नहीं हो सकता, वो terrifying experience था क्योंकि उसे देख सब कोई shocked हो गया था. Okay, so option C आपका आंसर होगा. Very good everyone. Moving on to the next question, also taken from NDA 1 2021. Elephants dash when they perceive danger. Perceive मतलब देखना. So elephants dash when they perceive danger. Okay, so you have to find out the sound of the elephants, and the sound that elephants make is trumpet. Okay, so trumpet is the sound of the elephants called. So elephants trumpet when they perceive danger. So option A will be your correct answer. Frolic का मतलब है to have fun. Whine is the sound that mosquitoes make. Okay, और sing का तो मतलब पता ही है. So elephants don't sing, frolic or whine, they trumpet. Moving on to the next question, also from NDA 1 2021. The first film on Tagore was such a success that now they are going to make a dash. Excuse me guys. Okay, time's up guys. Answer will be option C, sequel. ठीक है, जैसे होते हैं ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 आया है, तो उसको बोलते हैं सीक्वल, यानी कि जो सीक्वेंस में आ रहा है. नाउ दिस वर्ड, it will not be a serial, it will not be a sequence, it will not be sequential, it will be sequel because it's the name of the parts that come for any plays, any book, novel, movies and so on. So that is the word that we use for the parts, okay, that come consequently, successively after the first part, तो उसको sequel बोलते हैं. Similarly,
फॉर एग्जाम्पल यू विल सी सम फिल्म्स जिसके प्रीवियसली क्या हुआ था, मतलब फिल्म बन चुका है, ठीक है, अब आपको दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर कि ये हुआ कैसे, ठीक है, कैसे ये सब चीज हो रहा था, तो उसका पास दिखाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, सीक्वल नहीं बनाते, वो बनाते हैं प्रीक्वल, ठीक है, यानी कि क्यों ऐसा हुआ उसके पहले वाला जो पार्ट दिखाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना पास्ट दिखा रहा है। तो अगर कोई डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है जो उस मूवी का पास्ट दिखाए, वो हो जाता है आपका प्रीक्वल, ठीक है, और फ्यूचर जो हो रहा है या फिर होने वाला है वो होगा सीक्वल, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज फ्रॉम एनडीए 2020। Simulations of the 20th century by climate models that exclude the observed increase dash greenhouse gases failed to simulate the increase in temperature over the second half of the 20th century. You have to find out the correct preposition here. ओके यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज के बारे में बात हो रही है, सो इट शुड बी इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखोगे कि सेम सेंटेंस में इंक्रीज इन टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। तो अगर कोई चीज का इंक्रीज के बारे में बात हो रही है देन यू विल यूज इंक्रीज इन। लेकिन अगर किसी परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस गैसेस 50% बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल, और 20% बढ़ गया, देन यू विल यूज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस बाई 20%, तब आप लोग बाई यूज करेंगे, ठीक है। या फिर अगर 10 से 20 हो गया तो क्या यूज करेंगे, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस बाई फ्रॉम 10 to 20%। ओके क्लियर। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, also from NDA 2020, in extremely poor societies, children can be put to work dash a young age and are therefore a source of income. Again, you have to find out the appropriate preposition here. So here you can see young age, and whenever you use any kind of age, what is the preposition you use before that? It should be at. So in extremely poor societies, children can be put to work at a young age. So for example, अगर 10 साल की उम्र में काम में लगाया, so it should be at 10 years of age. Okay, तो at जो preposition है वो हमेशा age के पहले use होता है. Okay, at a young age, at an early age, at an older age, at 10 years, at 15 years of age, and so on. ठीक है? Now, moving on to the next question, also from NDA 2020, people who are averse dash hard work generally do not succeed in life. So you have to find out appropriate preposition to use with the word averse. What is the meaning of averse? Disinclined. People who are not ready. Okay, so averse का मतलब है not ready, or those who don't like, don't like. So what will be the correct preposition? जल्दी से बोलो. You are, if you don't like something, you are averse to that thing. So averse के साथ जो हमेशा appropriate preposition use होता है वो है to. So if you don't like to go to school, you say I am averse to school. Yeah, averse to go to school. Okay, so averse always has this preposition to after it. So option A will be your correct answer. Okay, next one. This is also from NDA 2020. I have known her dash a long time. ये तो बहुत easy है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई हैव नोन हर डैश अ लॉन्ग टाइम, लंबी समय से मैं उसे जानती हूँ या जानता हूँ। ओके, सो टाइम्स अप। आंसर इज आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बी होगा आपका आंसर। काफी इजी था ये, ठीक है। देखो सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सिंस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर परफेक्ट टेंसेस, ये हमेशा याद रखना। परफेक्ट टेंस क्या है? कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट होके और एक टाइम के बाद खत्म हो गया हो, दैट इज कॉल्ड सिंस। ओके, या फिर कुछ ऐसा काम चल रहा है जो पहले स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक चल रहा है, सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो दे यूज सिंस। ओके, सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो we use since. Okay, so यहाँ पे I have known her for a long time. Okay, तो perfect tense नहीं, to be more precise ये perfect continuous tense के साथ
ये वर्ड जो है सिंस यूज होता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं आपके इंतजार कर रही थी। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस में सिंस का यूज होता है। लेकिन जब आप उनको या किसी को बहुत टाइम से जानते हो, देन यू यूज द वर्ड फॉर, बिकॉज नो फिक्स टाइम इज बीइंग टॉक्ड ऑफ हियर। Now moving on to the next question, also from India 2020. I accepted the offer dash certain conditions. Very good, Vidhi. Yes. Since is used when we have a definite time which is mentioned, like 5 years, 2 months, 1 year, yesterday, morning, and so on. Okay, I accepted the offer dash certain conditions. कुछ शर्तों के basis पे मैंने ये offer accept किया. तो कौन सा preposition आएगा? Obviously it will be on, right? Option A. I accepted the offer on certain conditions. On certain conditions. Certain conditions के आधारित होके मैं ये offer accept की. So option A will be your correct answer. Now we will move on to the next question. So before that, I am going to also tell you something about our ND exam online course 2022, which has been provided especially for those of you who's going to take your NDA 2 2022 exam, or for that matter next year's NDA exam. अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी से करना स्टार्ट कर लो और हमारी NDA एग्जाम ऑनलाइन कोर्स पे एनरोल हो जाओ। पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, देन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको NDA के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, PDF स्टडी मटेरियल, सैंपल प्रैक्टिस, Q&A, क्विजेस, प्रीवियस ईयर्स Q&A, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। और सिर्फ यही नहीं, जो लाइव क्लासेस अभी हो रही है उनके सारे PDF मटेरियल्स आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगा इन द पर्टिकुलर सेक्शन विच इज NDA 1 2022 एग्जाम लाइव क्लास एंड आंसर की। यहाँ पे सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे और उनके साथ आपके सारे PDFs भी मिल जाएंगे। Now, the next question also from NDA 2 2019 now. The Election Commission on Saturday dashed that the assembly elections in 5 states will be held from November 12 to December 7. Now, this is a vocab based question. You have to find out what is the correct word to use here. Very good, Anirudh. Exactly. So, please, अगर आपने like और share नहीं किया है सेशन को, please like और share जरूर कर दीजिएगा. You guys know, but still you don't like the session, ना? ऐसा मत करो, please. Okay, so the Election Commission on Saturday pronounced, announced, promulgated or issued. Obviously, it will be option B, announced, है ना? डिक्लेयर किया या अनाउंस किया कि असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे 5 स्टेट्स में वो इस डेट से लेके इस डेट तक चलेगी, है ना? सो इट इज अ सिंपल अनाउंसमेंट, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अनदर थिंग लेट मी ऑल्सो टेल यू कि यहाँ पे जो वर्ड है ना प्रोमलगेटेड, बहुत बच्चे ये भी बोल रहे थे मैम प्रोमलगेटेड का क्या मतलब है। इट मीन्स टू मेक समथिंग पब्लिक, टू मेक सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट पब्लिक, पब्लिक में बताना, स्पेशली फॉर अ लॉ और एन ऑर्डर और अ डिक्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप मास्क नहीं पहनोगे तो 100 रुपये का फाइन होगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो चीज है ये वो लोग अनाउंस नहीं करेंगे, द गवर्नमेंट विल नॉट अनाउंस इट, व्हाट विल बी दे डू, दे विल प्रोमलगेट इट। इसका मतलब है ये एक ऑर्डर है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो 100 रुपये का फाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ है। आई वोंट से लॉ, इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस एक सिंपल अनाउंसमेंट हो रहा है, सो दैट इज व्हाई वी हैव चोजन ऑप्शन बी अनाउंस, बिकॉज इट इज नॉट अ लॉ और एन ऑर्डर और अ decree which has been passed for public good, right? Okay, moving on to the next question. This is also from NDA 2 2019. The victims were fruit vendors and they were going in an auto when they dash an accident on the way. आपको यहाँ पे चूज करना है, अगेन दिस इज अ vocab based question, you have to find out the right word. ओके, द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स, ऑटो से जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गए उनका, तो व्हाट विल बी द वर्ड फॉर इट, मेट विथ एन एक्सीडेंट। सो मेट विथ एन एक्सीडेंट का मतलब है एनकाउंटर्ड और फेस्ड और बी इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, सो मेट विथ विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। ओके, moving on to the next question, also from India 2 2019. Scores of villagers are dash a sit-in protest against the construction of a new underpass. So again you have to find out the correct word. It's a vocab based question again. So what do you do for a protest? Do you perform a protest? Do you sit a protest? Do you stage a protest or do you stand a protest? The correct word will be stage a protest. So अगर आप कोई protest करते हो then you basically stage it.
You don't perform it because it's not a dance or a singing competition, right? It's not sitting, it's not also standing, it's staging or stage a protest. ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर. ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू स्टेज अ प्रोटेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Also from NDA to 2019, it is common for patients to stop dash medicine as soon as they start feeling better. तो ये तो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू हैज डन दिस इन योर एंटायर लाइफ. नहीं, थोड़ा सा अच्छा फील हो गया तो मेडिसिन लेना ही बंद कर देना है ना. तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पेशेंट्स के साथ भी, दैट दे स्टॉप eating, gulping, swallowing or taking. What is that word? You don't eat the medicine, you don't gulp the medicine, you don't swallow the medicine. You swallow a tablet, ठीक है, but you don't swallow the medicine. What do? You take a medicine. आप medicine लेते हैं, है ना. हम हिंदी बोलते दवाई लेना, same thing, taking a medicine. Okay, so option D will be your correct answer. Very good, everyone. Next question, also from NDA to 2019. A 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital dash a cancerous tumor from one of her kidneys. ठीक है, तो ये भी vocab based question, आपको ढूंढना है कि वो करेक्ट वर्ड क्या होगा. तो 4 साल की लड़की थी, उसके किडनी में कैंसरस ट्यूमर हुआ था, तो क्या करेगा डॉक्टर? ऑब्वियसली ऑपरेशन करके उसको रिमूव करेगा, है ना, ट्यूमर को हटाएगा. सो रिमूव विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. रेजुवेनेट का क्या मतलब है? रिफ्रेश. रिजुवेनेट का मतलब है रिफ्रेश. डिस्प्लेस का मतलब है कि आप अपने घर में रह रहे थे, अचानक कोई आके आपको घर से निकाल दिया, सो यू हैव बीन डिस्प्लेस्ड, यानी कि आपको जहां रहना था वहां से आपको इलीगली हटाया गया है. ओके, अनराइटफुली हटाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस. एंड रिप्लेसेस व्हेन समवन हैज कम एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन योर हाउस इंस्टेड ऑफ यू, तो वो हो गया रिप्लेस. आपको निकाल के दूसरों को रिप्लेस कर दिया आपके जगह में. ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Next question. Now this is from NDA 1 2019. Dash forests prevent erosion. तो अगर आप environmental science पढ़े हो अच्छे से तो ये बात जो है, ये question जो है आप लोगों के लिए केक वर्क होगा. Dash forests prevent erosion. को किस तरह का forest erosion से बचाता है, erosion रोकता है? Very good Anish. Okay, तो जैसे आपको पता है लीन फॉरेस्ट जहां पे कम पेड़ हो, दैट कैन नॉट सेव फ्रॉम इरोशन. इट विल टेक अ डेंस फॉरेस्ट टू प्रिवेंट इरोशन, है ना. सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, रूट्स जो है, जो पेड़ के रूट्स होते हैं, दैट हेल्प्स टू बाइंड द सॉइल टुगेदर, सो दैट अगेन हेल्प्स इन that again prevents erosion. Okay, so that is why dense forest will prevent erosion. Option B. काफी इजी वाला क्वेश्चन था. नेक्स्ट वाले में चलते, देखो ये भी NDA 1 2019 से है. 3 people were arrested and an illegal arms unit was dashed by the police in a raid. अच्छे से सेंटेंस को पढ़ो और ऑप्शंस भी. ओके गाइस, इफ यू हैव नॉट जॉइंड येट, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ. बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक से. लाइक कर दो और शेयर भी करना मत भूलिए इस पर्टिकुलर सेशन को. ओके, 3 पीपल, ओके, 3 आदमी, 3 लोग व्हाटएवर अरेस्ट हो गया है, और रेड में पुलिस ने क्या किया, एक इलीगल आर्म्स यूनिट को रिवील किया, सर्च किया, डिस्कवर किया, बस्ट किया. द करेक्ट वर्ड विल बी वेरी गुड प्रतीक्षा, इट विल बी बस्टेड. अगर रेड में पुलिस कहीं कोई भी यूनिट को, किसी चीज को कॉन्फिस्केट करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बस्टेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन बस्टेड, इसका मतलब है मेरे को रेड में, पुलिस में मैं पकड़ी गई, ठीक है, या फिर मेरे को बैन कर दिया गया, व्हाटएवर, मेरे को जेल हो गया. So that is called busted. So busted is a word that is always used with police raids. Always remember. So option D will be your correct vocab to use here. Okay. Next question. This is also from NDA 1 2019. A woman got into the car and dashed. Very easy. But phrasal verb आपको यहाँ पे ढूंढना है करेक्ट वाला. A woman got into the car. वो कार के अंदर गई और क्या की? Drove off, broke down, rode in या drove in. Yes, Aryan, absolutely. What a drug racket was busted type का कुछ ऐसा होता है, smuggling whatever.
Okay, so here the correct phrasal verb will be option A, drove off. मतलब drive करके चली गई. ठीक है. So woman got into the car and drove off. गाड़ी चला के चली गई वो. So option A will be a correct option. Now broke down का क्या मतलब है? Collapsed. Okay, collapse. Rode in और drove in का कोई मतलब नहीं होता. ठीक है. So obviously option A will be a correct answer. Right? Next question, also from NDA 1 2019. The lecture was not very interesting. In fact, I dash in the middle of it. ठीक है, लेक्चर बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था, तो क्या हुआ, मैं उसके बीच में ही आई शोड ऑफ, आई पुट ऑफ, आई डोज्ड ऑफ और आई प्लग्ड ऑफ. आप लोग क्या करते हैं, लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा, क्या करते हैं बीच में, सो जाते. सिंपल. तो क्या होगा उसका फ्रेजल वर्ब, डोज्ड ऑफ. ठीक है, I dozed off. So option C will be your correct answer. Right? Showed off नहीं होगा, मतलब दिखावा करना. Put off का मतलब है postpone या delay करना. और plugged off मतलब obviously plug खोल के निकाल देना. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कुछ भी हो, गैजेट हो वगैरह. तो dozed off ही होगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन NDA 1 2019 से. The cops dash murder by kin. मर्डर बाय किन मतलब अपने लोग ही अगर हत्या कर रहे हो. मर्डर बाय किन, किन मीन्स क्लोज रिलेटिव्स. एक्सक्यूज मी गाइस. द कॉप्स सस्पेक्ट अ फोर्ट मैनेजर एडमिनिस्टर. पुलिस क्या करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं. राइट, सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. Right. Now we move on to the next questions. Again, I'm going to show you about our one of the best courses that we have in the entire market, which is SSB interview online course. तो NDA 1 2022 एग्जाम आप लोग क्वालिफाई तो कर लोगे. ठीक है, पूरा यकीन है मुझे, क्योंकि आप लोग जैसे अच्छे से आंसर कर रहे हो. आई नो यू पीपल आर ऑल प्रिपेयर्ड, रेडी टू रॉक द एग्जाम. बट एग्जाम के बाद आपको SSB के लिए भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो है आपका नेक्स्ट स्टेप टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू. तो एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी काफी डिफिकल्ट होती है, बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है. तो उसके लिए हमारे पास ये कोर्स है, और कोर्स के अंदर है एसएसबी इंटरव्यू के रिलेटेड फुल फ्लेजेड लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिस सेट्स. सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो हमारे हर रोज एसएसबी इंटरव्यू के लाइव क्लासेस भी चलती रहती है मंथली बैचेस में. तो आप ये कोर्सेज क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ठीक है, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज फ्रॉम NDA 2 2018. We fail to understand your reasons for dash the college without completing the degree. So you have to find out the correct word for it. Okay, we fail to understand your reasons for attending the college without completing the degree. तो आप कैसे कॉलेज कैसे अटेंड कर सकते हैं अगर आपका डिग्री नहीं खत्म हुआ. ज्वाइनिंग द कॉलेज, लीविंग द कॉलेज और रिफ्यूजिंग द कॉलेज. इट वुड बी ऑप्शन सी, है ना. वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजंस फॉर लीविंग द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री. आपके डिग्री कंप्लीट किए बिना आप क्यों कॉलेज छोड़े, वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, है ना. सो ऑप्शन सी इज योर आंसर. क्वाइट इजी था ये. नेक्स्ट देखो, ये ऑल्सो NDA 2 2018 से है. She dashed her energy and started shouting only when she heard the noise of bulldozers and cranes. So again, you have to give me the correct word for it. She dashed her energy. So what do you do your energy? You check your energy, you conserve your energy, you maintain your energy, or you control your energy. तो अगर आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो, बचा के रख रहे हो कि भाई बाद में काम आएगा ये, सेव्ड एनर्जी, तो आप क्या करते हो, you conserved the energy, right? So option B is your correct option. She conserved her energy and started shouting only when she heard the noise of bulldozers and cranes. Checked नहीं होगा, maintained नहीं होगा, controlled भी नहीं होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. देखो NDA 2 2018 से ये भी है. द ब्रिटिश डैश ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया collapsed in the first half of the 20th century. You know that British had colonies in Africa and Asia, but it collapsed in the first half of the 20th century. So what is it known? British hegemony. Okay, so hegemony is rule, power. Okay, so option A will be your correct answer. The British hegemony all over Africa and Asia
collapsed in the first half of the 20th century. It is not domicile. Domicile matlab the state of your permanent residence. Okay, the state, place, or wherever you are permanently residing. For example, India, it's a permanent residence in the country. Residence bhi wahi hai, same rehna. Or inheritance is what you are getting from your ancestors. So here it should be hegemony. Okay, चलो next वाला NDA 2018 से ये भी है. Excuse me guys. The football match has to be dash because of the weather. So you have to give me the correct word for it. Weather के लिए football match को क्या करना पड़ा? Called off, continued, put off or turned off. Okay. The correct answer is weather की वजह से football match को cancel करना पड़ा. So answer will be A, called off. That means cancelled. कंटिन्यू तो नहीं हो सकता अभी, है ना. पुट ऑफ का क्या? डिलेड और पोस्टपोन. और टर्न्ड ऑफ, यू ओनली टर्न्ड ऑफ रेडियो और एनीथिंग डाउन. ओके, सो टर्न्ड ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एनडीए 2018 से ये भी है. इफ आई वर रिच डैश अ लॉट. Excuse me guys. No, this is a subjunctive. This sentence is in subjunctive mood, यानी कि imaginative. अगर मैं बहुत अमीर होती, मैं नहीं हूं, पर अगर मैं होती तो मैं क्या करती? मैं travel करती. So it would be all in past tense. If I were rich, I would travel, है ना? So option C will be your correct answer. Very good. Yes. So C will be a correct answer. I hope everybody knows the subjunctive mood में जितने भी sentences होते हैं वो सारे past में ही होते हैं, simply because it is not the present or it's not reality. Now next question. This is from NDA 1 2018. The tired traveler dash on in the hope of finding some resting place. You have to find out the correct word for it. Yes, Anish, very good. The tired traveler strolled on, scurried on, paraded on or plodded on. Now, the traveler was already tired. तो अगर आप tired होंगे तो आपका चलने का स्टाइल कैसा होगा? बहुत भारी चाल होगी ना, बहुत ज़्यादा tired होगी. You will drag your steps. You'll walk with very heavy steps because you are tired. So that kind of walking is called plodding. So plodding is when you are tired and you are dragging your feet and your steps are very heavy because all your energy has been drained out. So that is called plodding. Strolling is having a good, very leisurely walk, I would say. Leisurely walk. So पार्क वगैरह में आप लोग घूमने जाते हो ना, तो कैसे चलते हो? एकदम आराम से, बिल्कुल, है ना. So that's called a leisurely walk or strolling. ठीक है. Scurried is the type of walk that you will see rats or rodents, rabbits, okay, sometimes spiders also, या फिर cockroaches वगैरह आप देखोगे ना जो इधर से ऐसे ऐसे करके जाते हैं. So that is called scurried. So basically small insects or rodents, rats, they scurry across the floor. Okay, that's how they move. And paraded is when you are walking with long confident steps. So if you are very confident, you will parade in any place. Okay, you'll parade through the place. That means you're using your long steps, very confident, very long steps to walk. So that is known as parading. Okay, but here we will use option D, which is plodded. Okay, moving on to the next question, also from NDA 1 2018. The car was damaged beyond repair in the dash accident. You have to give me the correct adjective. So the accident was so bad that the car was damaged beyond repair. कि इतना ज़्यादा कार डैमेज हो गया कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता. तो सोचिए कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा. So what is the word that you will use to describe such kind of an accident? It will be not outrageous, because outrageous is something completely indecent, very impolite. It is not nasty, which means, bad. It is not heinous. Nasty means unpleasant also. It is not heinous, which means it's like wicked or evil. So you use the word heinous for any crime. Okay, heinous murder or heinous crime. So you'll use the word ghastly, which means terrifying, horrible, gruesome. Okay, so that is the word ghastly that you're going to use. B. Okay, not C. Nasty is unpleasant.
Okay, and you use the word nasty in a very in a very moderate way, जब उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है पर आप उनको थोड़ा नास्टी बोल रहे because it is a bit unpleasant. Okay, but here something extreme has taken place, so here you have to use the word ghastly. Right, so option B is your answer. Next question, also from NDA 1 2018. They gave a dash dinner to celebrate the occasion, which impressed every guest. So you have to give the correct adjective here as well. ऐसा डिनर उन्होंने उस ओकेशन में आयोजन किया कि सारे गेस्ट जो है वो इम्प्रेस्ड हो गए. सो व्हाट काइंड ऑफ अ डिनर इट वाज? ऑस्टियर, पब्लिक, sumptuous or summary? Obviously the correct adjective to use here is option C, sumptuous. Sumptuous means lavish, pompous, grand. Okay. So that is the word that you'll use for dinner. So sumptuous meal or sumptuous is used with meal, dinner or any kind of food when it is being done in a very lavish, very pompous way. Austere means strict, severely strict. Okay, so austere will not be your answer. Not, it will not also be public. It will not also be summary. It is option C, sumptuous. Right, next question. This is also from NDA 1 2018. Once the dash manuscript is received by the publishers, it is typed in double space. Find the correct adjective. Okay, so time's up. The answer will be option C. Once the complete manuscript is received by the publisher, okay, it is typed in double space. So option C will be your correct answer. ऑस्टियर का मतलब है हिमांशी वेरी स्ट्रिक्ट सिवियर. जैसे आप देखते हो सन्यासी जो थे वो अपनी लाइफ बहुत ऑस्टियरली गुजारते थे, मतलब वो एकदम से क्या बोलते हैं, बहुत कम खा के रहना, ठीक है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहनना, या फिर मिट्टी के ऊपर सोना विदाउट एनीथिंग, एनी पिलो और एनीथिंग. So that's called a self-restrained strict life. So that kind of strictness is called austere. Okay, very strict. चलो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर आपका सी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. दिस इज आल्सो फ्रॉम एनडीए 1 2018. लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है. इसके बाद हम लोग जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आई एम यूज्ड टू डैश इन क्यूज. क्यूज मींस लाइन, यानी कि लाइन में खड़े रहने की आदत है ना. तो क्या यूज करोगे आप यहाँ पे? आई एम यूज टू डैश इन क्यूज. आई एम यूज टू स्टैंड इन क्यूज. आई एम यूज टू स्टैंडिंग इन क्यूज. आई एम यूज टू स्टैंड अप इन क्यूज. आई एम यूज टू स्टैंडिंग स्टिल इन क्यूज. So the correct here, it is a grammatical question. The correct word to use here is option B. I am used to standing in queues. अब आप लोग बोलोगे लेकिन मैम used to के बाद हम लोग हमेशा verb use करते हैं, तो standing क्यों? ये तो ing verb है. देखो used to से पहले यहाँ पे एक helping verb है. जब भी used to से पहले am, is, are, was, were वगैरह वगैरह verbs use होगा. helping verbs, कोई भी helping verbs, ठीक है, और उसके बाद यूज टू यूज होगा, तो उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ब जो है वो आपको यूज करना है. लेकिन अगर यूज टू से पहले यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, तब आप यहाँ पे क्या यूज करते? ओनली वर्ब. सो फॉर एग्जाम्पल यू कुड से आई यूज टू वेक अप अर्ली. इसका मतलब है कि आप पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. So when no helping verb is there before used to, then you will say I used to wake up early. यानी कि आप एक टाइम था जो जल्दी उठते थे सुबह, ठीक है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर used to से पहले am is are मतलब कोई भी helping verb रहेगा, तो used to के बाद ing verb आप लोगों को यूज करना है. इसका मतलब ये है कि वो हैबिट अभी तक आपके साथ है. I am used to standing in queues, इसका मतलब है पहले भी आपको आदत था और आज भी आदत है. Everybody clear about the difference? अगर आप सिर्फ यूज टू यूज कर रहे हो, इसका मतलब है आप सिर्फ एक पास्ट हैबिट के बारे में बता रहे हो. लेकिन अगर आप यूज टू से पहले एम, इज, आर वगैरह हेल्पिंग वर्ब्स यूज करो, इसका मतलब है वो हैबिट अभी तक आपके साथ है. तो एम, इज, आर वाला मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यूज टू यूज हो रहा है तो आप यूज करेंगे वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज स्टैंडिंग. और अगर सिर्फ यूज टू यूज होता तो आप उसके साथ सिर्फ मेन वर्ब यूज करते. ओके, क्लियर? तो हियर इट विल बी ऑप्शन. Now moving on to the general questions now. So फिर से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ. हमारे पास NDA एग्जाम ऑनलाइन कोर्स 2022 का कोर्स है हमारे ऐप के अंदर, तो ऐप को डाउनलोड कर लो और इस कोर्स पे एनरोल हो जाए. अगर आप अच्छे से अपनी NDA 2 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और
अगर आप नेक्स्ट ईयर में एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें जो है प्रिपरेशन करने के लिए मिल जाएगी। और ये जो भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं इनका पीडीएफ मटेरियल्स भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगा इन द सेक्शन एनडीए 1 2022 एग्जाम लाइव क्लास एंड आंसर की के नाम से। यहाँ पे आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, और उनके साथ उनका पीडीएफ मटेरियल्स भी आपको मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता इज ट्रू टू डैश। नाउ दिस इज जनरल क्वेश्चन। सीता इज ट्रू टू डैश। नो, इफ यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स दैट मीन्स आप अपने बात का जो है पक्के हो। तो यहाँ पे जो हम लोग पैटर्न यूज करते हैं वो है ट्रू टू योर, हिज, हर, देयर, आर वर्ड्स। ठीक है, क्लियर। सो ट्रू टू वर्ड्स वर्ड नहीं होगा, ट्रू टू द वर्ड्स भी नहीं होगा, या ट्रू टू वर्ड्स भी नहीं होगा। इट शुड बी हर वर्ड्स। जो अपने बातों पे पक्के हैं उनका प्रोनाउन आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर आप अपनी बातों का पक्के हो तो यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स। आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स। ओके, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, हर वर्ड्स, देयर वर्ड्स, आवर वर्ड्स एंड सो ऑन। ठीक है, हमेशा याद रखना। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर लकी डैश इन द 20th century। क्या होगा इस ये वाला क्वेश्चन का आंसर? यू आर लकी बाय बीइंग बोर्न, फॉर बीइंग बोर्न, टू हैव बोर्न। नो, इट शुड बी टू हैव बीन बोर्न, और यू आर लकी टू बी बोर्न। ठीक है, इन द 20th century। सो अगर यहाँ पे टू हैव बीन बोर्न की जगह टू बी बोर्न होता तो भी ये आपका आंसर होता। यू आर लकी टू बी बोर्न इन द 20th century, और यू आर लकी टू हैव बीन बोर्न इन द 20th century। ठीक है, now next question. The result of the prolonged discussion was dash. Find out the correct word. You have to find out what part of speech to use here. Can you tell me what part of speech you are looking for? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे parts of speech है same word का। disappointment which is a noun, disappointing which is an adjective, disappointed which is a verb, to disappoint which is an infinitive. Confusion आ गया है ना, A B C. The result of the prolonged discussion was dash. Here you have to look for an adjective. Why adjective? Because this word is going to describe the result, which is a noun. Clear? So what is that? It should be option B. The result of the prolonged discussion was disappointing. Clear, everyone? Okay, next sentence. My house is insured dash theft and fire. थेफ्ट और फायर से, चोरी और आग से मेरा हाउस, मेरा घर इंश्योर्ड है। सो व्हाट इज दैट preposition टू यूज? माय हाउस इज इंश्योर्ड फॉर थेफ्ट एंड फायर, इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट एंड फायर, इंश्योर्ड इन थेफ्ट एंड फायर, और इंश्योर्ड टुवर्ड्स। So see, these two things are what? Negative things. So whenever your life or your house is insured, अगर आपका life या आपका घर insured है किसी चीज से बचने के लिए, you use the preposition against. Okay? So it should be my house is insured against theft and fire. ठीक है? So option B will be your correct answer. Next question. He looks as if dash very. He looks as if he is very, was very, would be very, or were very. The correct answer will be option D. Okay, option D. वो दिख रहा है जैसे he is very, very मतलब क्या? tired. वो tired जैसा दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे as if का इस्तेमाल हुआ है, तो as if के बाद क्या होगा? If a singular pronoun or a singular noun is used, it should be plural.
and vice versa. The verb should be plural. So he looks as if he were very. So option D will be your correct answer. Okay. Very good, Jagam, Pratiksha, Vidit, Priyush. Okay. Next question. How are you dash in your new job? Are you enjoying it? So you have to give me the correct phrasal verb here. हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट? तो आपका नया काम है तो क्या घुल मिल गए हो क्या अच्छे से? दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू मीन. क्या आप एंजॉय कर रहे हो? सो व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब? हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब. ठीक है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब. कैरिंग ऑन मीन्स वही सेम काम करते रहना, बट इट्स अ न्यू जॉब, सो हाउ कैन यू कैरी ऑन? Keeping on also means the same thing, going on also means the same thing, but getting on means आप adjustment level जो है वो check करने के लिए. Are you being able to adjust in your new job? So you can also say that by saying how are you being able to get on with your new job, get on in your new job, and so on. Okay, so getting on is that word which means to get adjusted, okay, with something. Clear? So C is your answer. Next question. Nobody believed Ram at first, but he dashed to be right. पहले राम का कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में वो राइट यानी कि सही साबित हुआ. तो अगर यहाँ पे साबित हो रहा है वो कुछ, कोई भी कुछ साबित होता है बाद में जाके, तो वो कौन सा फ्रेजल वर्ब आप यूज करते हैं? नोबडी बिलीव्ड राम एट फर्स्ट बट ही केम आउट टू बी राइट, वो कैरिड आउट टू बी राइट, वर्कड आउट टू बी राइट, और टर्न्ड आउट. सो अगर कोई प्रूफ हो गया है कि ये काम या फिर वो चीज जो उसने जो बोला वो सही है, तो वी यूज द फ्रेजल वर्ब turned out. So if something you were telling no one was believing you and then you were proved to be right, so turned out is the word that you use. Okay, so turned out का मतलब proved to be. Okay, all right. Next question. How we dash to aging is a choice we must make wisely. Aging, बुढ़ापा, ठीक है. How we dash to aging is a choice we must make wisely. What is the word? It should be option A. How we respond to aging. Respond के बाद जो हमेशा preposition use होता है वो है to. You respond to somebody or to something, right? तो aging को आप कैसे respond कर रहे हो, वो choice हमको अच्छे से बनाना है, ठीक है, अच्छे से लेनी है. So option A will be your correct answer. Next question. They should spend less time dash about and more with their children. They should spend less time dash about and more with their children. तो क्या होगा? Answer is option A, gallivanting. That means frolicking around, having fun. मतलब अपने बच्चों की तरफ वो उनका ध्यान नहीं रहता, वो क्या करते हैं, इधर उधर पार्टी वार्टी करते हैं, ठीक है, ज्यादा मस्ती करते फिरते हैं. तो दैट इज व्हाट गैलिवेंटिंग इज ऑल अबाउट. नॉट ग्रेविटेटिंग, नॉट फ्रिस्किंग. फ्रिस्किंग मतलब चेक करना, लाइक यू हैव फ्रिस्किंग इन एयरपोर्ट्स, है ना, या मॉल्स में घुसने से पहले अच्छे से चेक नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिस्किंग. एंड फ्लर्टिंग इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट हियर. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, गैलिवेंटिंग अबाउट. नेक्स्ट. The leader of the opposition party condemned the communal riots in dash terms. उन्होंने communal riots को support नहीं किया, condemn किया, यानी कि he talked bad things. Obviously, he didn't support the communal riots. He discouraged the communal riots. So, in what terms he would speak? In ambiguous terms, in unparliamentary terms, in unequivocal terms, or uncontrollable terms? It should be option C, unequivocal terms. इसका मतलब है unambiguous, बहुत straight cut था, straight forward था. That he was not supporting the communal rights, it was very evident, it was very clear about what he spoke. So unequivocal का मतलब है in straightforward way. Okay, और ambiguous का क्या मतलब है? dubious. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. unclear, जो clear नहीं हो, ठीक है. तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग, राइट.
ओके गाइस, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगी. और इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ हमारे पास एसएसबी इंटरव्यू का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है. तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू एट अ वेरी अर्ली एज. नाउ नेक्स्ट, on his way to the capital, the minister dashed the eminent social worker at his residence. जल्दी से गाइस, आपको ये पे फ्रेजल वर्ब चूज करना है. कैपिटल की तरफ जा रहे थे मिनिस्टर और उन्होंने क्या किया, सोशल वर्कर के रेसिडेंस पे उनसे मिले, है ना. सो दैट इज व्हाट द वर्ड डिमांड्स. द मिनिस्टर मेट और विजिटेड द एमिनेंट सोशल वर्कर एट हिज रेसिडेंस. ठीक है, तो क्या होगा इसका फ्रेजल वर्ब, इट विल बी कॉल्ड ऑन. कॉल्ड ऑन का मतलब है विजिटेड या मेट. तो अगर आपका एक दोस्त आपके घर आपसे मिलने के लिए आता है, ही हैड कॉल्ड ऑन यू. ठीक है, कॉल्ड सिर्फ कॉल्ड नहीं होगा, कॉलिंग फॉर भी नहीं होगा, कॉल ऑफ भी नहीं होगा. कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल करना. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु हैव एंड डैश रेपुटेशन आर ऑफन अवॉइडेड बाय द रेस्ट. बाकी सब लोग उन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, तो किस तरह का रेपुटेशन होगा, अच्छा रेपुटेशन तो होगा नहीं, है ना. तो कोई बुरा रेपुटेशन ही होगा. तो कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे रेपुटेशन के लिए जो कि बुरा रेपुटेशन है. अनस्टेडी रेपुटेशन, unsavory reputation, unsafe reputation or unsatisfied reputation. Now if someone is having a very bad reputation, infamous reputation, then we use the word unsavory, which means infamous or simply bad taste. Savor का मतलब है taste, unsavory very bad taste. Okay, so option B will be your correct answer. ठीक है. Next question, the lions in the Gir forest are protected as they come under dash species. So what kind of species are protected then? Dangerous species, engendered species, enamored species or endangered species? I think all of you will be able to give me this particular answer because it's very simple. तो जो species extinct हो रहे हैं, क्या बोलते हैं उनको, endangered. Okay, so option D will be your correct answer. Endangered species, that is going to be extinct. Engendered नहीं होगा, ठीक है, because it has something to do with the gender. It should be endangered. Okay, next question, the soldiers waiting to go into battle for the first time were full of dash. Give me the correct word for it. पहली बार जो सोल्जर्स बैटल के लिए जा रहे थे, युद्ध के लिए जा रहे थे, उनके अंदर क्या था, एप्रीहेंशन, कॉन्सिडरेशन, एंटिसिपेशन और फ्रिविलिटी. सो पहली बार अगर सोल्जर्स किसी बैटल के लिए जा रहे थे, उसके अंदर था फियर और एंजाइटी, एंड द वर्ड फॉर इट इज एप्रीहेंशन, व्हिच मींस फियर और एंजाइटी. इट विल नॉट बी कंसिडरेशन, इट विल नॉट बी एंटिसिपेशन व्हिच मींस होप, इट विल नॉट बी फ्रिविलिटी व्हिच मींस हैप्पीनेस और फन. Okay, it will be option A. Right? Next and the last question, I would not commit myself dash that course of action. So you have to give me the appropriate preposition for the word commit. I would not commit myself of, I would not commit myself to, I would not commit myself by, I would not commit myself with. What will be the correct preposition? Fatafat se guys, after that I'll give you some homework questions and then we'll wrap up the session. Okay, so if you do not commit yourself, you do not do it to somebody or something. Okay, so commit के बाद जो preposition use होता है हमेशा, the appropriate preposition is to. So committed to something, you all are committed to join the forces. Okay, so commit के बाद to use होता है हमेशा, so B will be your correct answer. So guys, this was the last question of today's session and I'll give you some fill in the blanks homework questions now. So everyone start taking screenshots. So this is the first homework question. Everyone take a screenshot jaldi se. I'll tell you how to check the answers. Please do not give me the answers of these homework questions in the comment right now. Okay? Okay, everyone take a screenshot for the first question. This is the second one. Take a screenshot guys. Second homework question. Okay, moving on to the third one, third homework question. Take a screenshot. You have to check the answers on your own. So I'm going to tell you how you can do that. Okay. Okay, moving on to the fourth homework question on your screen. Everyone take a screenshot.
Okay, moving on to the next one. This is the last homework question. Take a screenshot, everyone. ओके तो आंसर्स कैसे चेक करनी है? आपको एनडीए एग्जाम ऑनलाइन कोर्स 2022 में जाना है. वहां पे मैंने जो सेक्शन आपको दिखा रही थी जहां पे पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे, विच इज एनडीए 1 2022 एग्जाम लाइव क्लास एंड आंसर की सेक्शन. उसमें आपको आज के लाइव क्लास का पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा. उस पीडीएफ मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिएगा. उसमें जो भी क्वेश्चन हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं वो मिलेगा आपको. और लास्ट में ये 5 होमवर्क क्वेश्चन के भी आंसर्स मिल जाएंगे. सो फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट चेकिंग योर आंसर्स. ओके, सो टू रैप अप द सेशन आई विल ऑल्सो रिमाइंड यू अबाउट आवर टेस्ट सीरीज, which is especially NDA 2022 mock test series for you. If you have not started practicing mock test series, please do that. Get yourself enrolled into it and start practicing mock tests. Also, do not forget to use the code warrior10 to get an extra 10% off on any of the courses or test series. So that was it from my side, guys. I hope आज का सेशन काफी enjoyable रहा है और आप लोगों का बहुत हेल्प हुआ है. अगर हुआ है हेल्प और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. So I will wrap up the session now. Next, Prashant sir will be coming up with the NDA 1 2022 Maths MCQ practice session. So stay tuned for his class, and I will also meet you tomorrow at the same time, which is 5 p.m. with the new topic for NDA 1 2022 exam. However, if you know anyone who's going to take CDS 1 2022 exam, for them our live classes starts from 10 a.m. and continue till 1 p.m. and my English class starts at 11 a.m. to 12 p.m. So make sure that you are attending our classes regularly and practicing the questions that we are giving for you. So everyone, stay tuned to SSB Crack Exams. Wait for Prashant sir's class now. Stay positive, stay healthy, and always stay motivated. Jai Hind.